Hey guys, good morning and I welcome you to Knowledges. तो जैसे कि हम रेगुलरली पढ़ते ही हैं, पर आज हम जो पूरा वीक का जो vocabs है वो आज डिस्कशन करेंगे. सो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ से रिलेटेड जो भी वांटिंग्स हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल नॉलेजिस्ट में उस ग्रुप में ऐड हो जाएं. आपको वहीं पे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगी, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वहीं पे मिल जाएंगी. और रेगुलर क्लासेस की शेड्यूल जानने के लिए आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first word is conduit. It is a noun. मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि नली मतलब ए पाइप, चैनल और ट्यूब through which liquid, gas or electrical wire can pass. देन इसका सिनोनिम हो सकता है जो कि पाइप है, स्पीलवे है, डक्ट है. और एंटोनिम्स क्या होंगी? ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन. देन द नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंस. एफ्लुएंस इज ए नाउन. तो इसका मीनिंग क्या है? लिक्विड वेस्ट, स्पेशली केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज. जो भी फैक्ट्रीज में केमिकल्स प्रोड्यूस होती हैं वो जो वेस्टेज रहते हैं, वो जो लिक्विड वेस्ट रहते हैं उसे हम एफ्लुएंट्स कहते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉज. कॉज इज अ नाउन. इट मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग. जो कि हमें ट्रबल करता है या इट कॉजेस सफरिंग फॉर अस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज माइक्रोबीड्स. माइक्रोबीड्स इज अ नाउन. मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स. Meaning is an extremely small particle of material manufactured for various application, especially one made of plastics, जो कि प्लास्टिक द्वारा बनी हुई होती हैं, and used in personal care products, cosmetics and detergents. जो कि हमारे जो भी डेली जो केयर प्रोडक्ट्स मतलब यूज करते हैं प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में और डिटर्जेंट्स में ये माइक्रोबीड्स जो प्लास्टिक माइक्रोबीड्स यूज होते हैं. Then the next word is garland. Garland is a noun, means a circle of flowers and leaves that is worn on the head or around the neck or in is hung in a room, etc. as decoration. जो भी माला या फिर हार हम अपने गले में या अपने बालों पे या फिर रूम को डेकोरेट करने के लिए जो भी यूज करते हैं, that is called garland, which is a noun. Then the next word is repercussions. It is a noun. इसका मतलब क्या है? an unpleasant effect or result of something that you do. जो भी मतलब किसी भी काम के जो भी रिजल्ट निकलता है, मतलब कोई अनप्लेजेंट इफेक्ट निकलता है. जो भी आपने किया है उसका जो भी रिजल्ट निकल रहा है, that is some way unpleasant or effective. Then the next word is province, which is a noun. It means one of the areas that some countries are divided into with its local government. तो province का जो synonym होता है वो क्या होगा? As we can say that synonyms can be territory, area, departments, and the antonyms are metropolis, then center, capital. Then the next word is thorny. Thorny is adjective. आप अगर रेगुलर बेसिस में ये क्लास करेंगे देन आई विल टीच यू दैट मतलब आपको वर्ड देख के कैसे पता करना, मतलब पता करेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है. इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास को रेगुलर बेसिस में देखें. जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे नोट करें या फिर टेलीग्राम चैनल जो नॉलेजिस्ट है वहाँ पे आप ज्वाइन होंगे तो फिर वो सुबह ही पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे आपको. और आप उसके बाद क्लास में मैं आपको एडिटोरियल समझाऊंगी और we will discuss the antonyms and synonyms of these words. Then the meaning of thorny is causing difficulty or disagreement. ठीक है. और एक थॉर्नी का मतलब क्या है? जो कि ट्रिकी होता है, मतलब जो कि कांटेदार होता है. ओके. So let's move to the next slide. So the first word is decree. It is a verb.
मतलब डिनाउंस, क्रिटिसाइज, कंडेम, मतलब किसी को दोष देना, ठीक है। मतलब एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आप किसी की आक्षेप करना, मतलब किसी को दोष देना, आक्षेप करना किसी को। The synonyms will be like disapprove, declaim, condemn, and the antonyms are praise, commend, मतलब किसी को दोष देना, and the opposite will be like किसकी praise करना, किसी को commend करना. It is not comment, it is commend. 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 Then the next word is elevate. It is a conjunct. Elevate मतलब although. Then the next word is shun. Shun is a verb. It means to avoid or evade or eschew. मतलब to avoid somebody or something. The synonyms will be like avoid, evade, refuse, disdain, and the antonyms for shun are accept, shirk. Then the next word is crumble. Crumble is a verb. It means to break or make somebody break into very small pieces, very tiny pieces. तो फिर क्या करना? मतलब किसी को, मतलब किसी भी चीज जो कि to it has broken or it has failed or it is weakened. The synonyms are fall apart, to collapse, tumble down, and the antonyms are mend, recover, revive. Now the next word is pernicious. It is an adjective. IOUS है, यूएस है, तो फिर it is an adjective as I said. तो इसका मतलब क्या है? हानिकारक या फिर घातक या विनाशकारी, which will cause what? It will cause restriction, which is not means which you can't notice, but it will gradually, slowly and gradually, it will lead you to destruction or it will harm you. So pernicious matlab having a very harmful or evil effect on somebody, something in a way that is slow and not easily noticeable. जो कि noticeable नहीं है, पर it will cause damage. Then precision. Precision is a noun. It means the quality of being clear or exact. मतलब clarity रहना किसी भी चीज में, पूरा precise रहना, मतलब जो भी बोल रहे हो that would be clear and confined. Sledgehammer. Sledgehammer is a noun. It means a way of doing something that uses a lot more power or force than seems necessary. मतलब जो भी आप कर रहे हो, मतलब जितना आवश्यकता के अनुसार आप उसमें ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज अ स्लेज हैमर. ओके, जितना मतलब नेसेसरी ही नहीं है, आप जितना एफर्ट दे रहे हो या फिर जो भी आप पावर या फिर फोर्स दे रहे हो उसमें उतना नेसेसरी नहीं है, बट यू आर गिविंग मोर एंड मोर फोर्स टुवर्ड्स समथिंग. Then the next word is nuance. It is a noun. मतलब a very small difference in meaning, feeling, sound, etc. मतलब बहुत ही, मतलब जो कि क्या कहते हैं, negligible amount of ऐसा कोई difference होना, मतलब बहुत ही very small difference in meaning, feeling or sound. मतलब जो कि a feeling that is not usually very obvious, a subtle difference in something. So the synonyms are subtlety, refinement, modulation, and the antonyms are brightness, suspicion. So next slide. Iteration. Iteration, sorry. Iteration is a noun. T-I-O-N है. It is a noun. It means repeating a set of instruction again and again to result of the previous day. मतलब किसी भी चीज को, मतलब आप कुछ कर रहे हो, उसमें अगर कोई मतलब बदलाव नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है, तो फिर you will be saying it another time. Means you will be repeating it for another time. मतलब जो भी है उसे repeat करना या renew करना. The process of repetition in utterance. ठीक है, किसी भी चीज में या काम में या बोलने में जो भी repetition आती है, that is called iteration. The synonyms for iteration are reduplication, repetition, renewal, and the antonyms are irregularity, rareness, and unusualness. Then the next word is vicious. IOUS है.
So it will be an adjective. It means cruel, done in order to hurt somebody or something. तो जो भी आप कर रहे हो in with having an intention that you are going to harm somebody or something. कुछ भी मतलब cruel thing या फिर cruel minded होके evil minded होके किसी भी काम को करना so that the person will get hurt by the action you are doing. Then the next word is vociferous, which is an adjective. OUS है, as I said earlier that OUS है तो फिर आपको पता चल जाएंगे कि adjective के हिसाब से यूज हुआ है. It means expressing your opinions or feelings in a loud and confident way. ठीक है, तो मतलब किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, दैट टू इन ए लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे. मतलब आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो इसके सिनोनिम्स होंगे outspoken and direct, and the antonyms for vociferous are silent, quiet. Then the next word is smack. Smack is a verb. It means to hit somebody with the inside of your hand when it is flat. मतलब आप अपने फिस्ट से या फिर फ्लैटेंड हैंड से मतलब पाम की तरफ से भी आप किसी को सडनली हिट कर देना, मतलब to strike or to hit somebody in a sudden or violent way. So the synonyms for smack are punch, to slap or hit, or antonyms are indirectly and inexact. And the next word is tortuous. Tortuous, OUS है यहाँ पे भी, so it will be an adjective. So it is complicated, not clear and simple. Simple. मतलब जो भी चीज है थोड़ी complicated है, जो कि as we read की, it is not precise, clear नहीं है. It is not simple. It is complicated. मतलब क्या है पता नहीं चल रही है. It is so complicated that you are not able to understand. You are not able to. You are not able to get it. And then the next word is fence. Fence means it is a noun. It means barrier या फिर wall. ठीक है. तो जो भी हम कोई भी दीवार या फिर सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? We used to confine it with a wall or a barrier. Then ghastly. Ghastly is an adjective. ly है, so it will be an adjective. It means extremely unpleasant or bad, हानिकारक. So synonyms for ghastly are frightful, horrible, terrible, and antonyms will be pleasant, excusable. Then the next word is cognizant. Cognizant is an adjective. It means aware, conscious. मतलब किसी भी चीज से अवगत हो जाना या फिर किसी भी चीज की जानकारी पा जाना, जानकारी पाके you will make yourself aware. मतलब पहले से ही चौकन्ना हो जाना. ठीक है. The synonyms will be conscious, aware, and the antonyms will be ignorant and unfamiliar. The next one is salutary. ry है, so it is an adjective. Means having a good effect on somebody or something, though often saying unpleasant. मतलब अच्छा प्रभाव डालने वाला, हितकारी, मतलब जो कि हमारा हित में सोचना. तो कोई भी हमारे अच्छे के लिए सोच रहा है या फिर किसी भी अच्छी चीज में होना, हित में होना, मतलब इन ए पॉजिटिव वे, वो हमारा हित सोच रहा है, as we say. So having a good effect on somebody or something, though often seeming unpleasant. The synonyms for salutary are beneficial, advantageous, and productive, while the antonyms are irrelevant and unproductive. Then the next word is prod. Prod is a verb. It means to push, tag, or nudge. ठीक है, मतलब to stimulate or to persuade, मतलब किसी भी चीज को मतलब reluctantly you are provoking someone or stimulating someone. ठीक है. Then the next word is perturb. Perturb is a verb to make somebody worried or upset. ठीक है. The synonyms for perturb are disturb, concern, trouble, and the antonyms are calm, composed, and reassure. Suo moto. Suo moto is an adjective, as we say, means relating to an action taken by a court of its own accord. वो जो भी चीज मतलब आप मतलब कोई इशू हो गई है, then the court will take the वो कोर्ट क्या करेगा, वो अपने ऊपर लेगा and he will take action accordingly.
Then the next word is paramount. Paramount is it's an adjective. It means most important, more important than anything else, or supreme, जिसे कि हम supreme कहते हैं, मतलब जो किसी भी चीज से सबसे पहले जो आता है, we give priority, we think that is very prior than any other thing. तो इसके synonyms क्या होंगी? Cardinal, preeminent, utmost, and the antonyms will be subordinate, inferior, minor. Then the next word is subservient. It is an adjective. मतलब टू रेडी टू ओबे अदर पीपल, मतलब किसी भी बात को ओबे कर लेना, किसी भी चीज को बोलने से बोलते ही मान लेना, ठीक है. So the synonyms for subservient are submissive, efficient, obedient, and the antonyms are independent, domineering. Then the next word is disastrous. Disastrous will be as has, so it's an adjective. It means terrible, harmful, or failing completely. As we know, disaster मतलब जो भी कि it causes complete destruction or causing or leading towards a great damage. The synonyms for disastrous will be catastrophic, devastating, ill-fated, and the antonyms will be fortunate, successful, and beneficial. Then the next word is abatement. Abatement is a noun. It means to diminish. कम होना या कम कर देना, मतलब धीरे 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 gradually decreases or gradually diminish with the action of being ended or succeeding. Succeed हो जाना या फिर the action where it gradually it comes to an end. धीरे धीरे खत्म होने आना, diminish. Then the synonyms for abatement are moderation, decline, easing, and mitigation. And the antonyms will be to intensification, to intensify, increasing. Then the last word is defy. Defy is a verb. It means to refuse to obey somebody or something. It means to deny, अब किसी भी चीज को मानने, मतलब ना मानना, मानने के लिए मना करना. Then the next word is decipher. Decipher is a verb. It means to succeed in reading or understanding something that you tried a lot as to, मतलब आप डिकोड करके किसी भी तरह इंटरप्रेट करके आप फिगर आउट कर लिए और you understood that. Then the next word is calculus. Calculus is a noun. It means a type of mathematics that deals with rates of change. For example, the speed of a falling object. तो यहाँ पे तो मैथमेटिक्स के बारे में ये जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाया था, आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लें. तो इसका मतलब तो कैलकुलेशन मतलब नॉट इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स बट इज स्टडी व्हिच इज रिलेटेड टू समथिंग दैट यूजुअली चेंजेस, जो कि मतलब बुक का चेंज होता है या फिर इट कंटिन्यूज विद ए चेंज इन इटसेल्फ, ठीक है. Next word is flirt. Flirt is a verb. It means to behave in a way that suggests you find somebody attractive. मतलब आप किसी को अट्रैक्टिव पा रहे हो तो उस हिसाब से हम जो बिहेव करते हैं, नॉट इंटेंशनली बट और सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं, but the way we behave is called flirt. Means to behave in a way that suggests you find somebody attractive, though without any serious intention you are teasing him or her. Then defect is a verb. It means to leave your country, a political party, etc., and join one that is the enemy. तो क्या करना, किसी country या फिर political party को छोड़कर क्या करना, जाके दूसरे जो enemy party थे वहां पे join कर लेना. It means to defect. It means to leave your own country and to join one that is considered to be your enemy's one. So the synonyms will be rebel. Rebel मतलब क्या करता है? Rebel मतलब वो लोग होते हैं जो कि आपको अगर ठंडी लग रही है, आप अगर सोच रहे मतलब लोगों मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स का स्टेटमेंट जो भी होता है, rebel what they do, they used to usually differs. Okay, तो आपको अगर ठंडी लग रही है they will say that no it's I'm feeling hot, this type का means it was an example. तो कुछ मतलब उनके और आपके जो भी मेंटेलिटी है, तो आप जो भी बोल रहे होंगे उसके रिलेटेड टू उनका जो क्या बोला जाएगा,
मतलब वो they used to protest कि नहीं ऐसा होना चाहिए. They will always be against you. To abscond, to desert, to renounce. Then the next word is turncoat. Turncoat is a noun, as we read that to leave a country and to join. This similar like defect means a person who stops supporting one political party or religious group etc. to join another with a very different views. मतलब आपकी जो as I said rebel मतलब आपकी जो view होंगी उसके हिसाब से उनके कुछ अलग ही view होंगी. आप जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से वो उनमें डिफरेंस में आएंगे, उनमें डिफर करेंगे वो that will if you are saying this thing then वो क्या करेंगे वो उसके opposite ही बोलेंगे. They are called rebels. Then the next word is assertion. Is a noun. It means a statement that says you strongly believe that something is true. तो फिर assertion, declaration sentence जहाँ की where the information provided is based on factual things, which is true. And then the next one is satrap. Satrap it is a noun. Means any subordinate or local ruler. मतलब जो पहले क्या होता था कि during the Persian empires they usually use this term, but मतलब जो भी local ruler होंगे या फिर जो भी वहाँ के subordinate होंगे वो उनके लिए ये term use की जाती थी. Jester is a noun. A man employed to amuse people by telling jokes, funny stories, etc. जो भी मतलब a joker, comedian or humorist who is employed to amuse people by telling jokes and funny things. Then the next word is bleak. Bleak is an adjective. It means not encouraging or hopeful. मतलब ऐसा कोई जो कि dormant stage में which will not encourage you or you are not hopeful about. Something which is cheerless. Then the next word is wet. Wet is a verb. Is to do careful and secret checks before deciding if somebody or something can be accepted or not. मतलब क्या करना मतलब carefully आप secretly कुछ चीज check करना कि ये acceptable होगा कि नहीं. Okay, to examine or to evaluate or to inspect before deciding or doing something. Abominable. Abominable LE है. So it's an adjective. It means very bad, shocking, loathsome, odious. Then disingenuous. Disingenuous is an adjective. UOUS है. Not candid or sincere. Typically by pretending that one knows less about something than one really does. मतलब ऐसे pretend करना जैसे कि आपको पता होगा. Still you will pretend like you know nothing. Cohort is a noun. A group of people with a shared characteristics. ठीक है. The synonyms will be group, unite, order. मतलब किसी भी एक गैदरिंग या फिर ग्रुप में मतलब एक ग्रुप का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होना ठीक है. Share a similar kind of characteristics. Intrusion is a noun. It means something that disturbs you or your life when you want to be private. Uh, the synonyms will be like interruption, infringement, disruption, and the antonyms will be like obedience and retreat. Then the next slide. Turpitude. Turpitude is a noun. It means depraved or weak behavior or character. The synonyms will be like vice, immortality, corruption. Then the next word is voyeurism. It is a noun. It means an interest in observing unsuspecting people while they undress or are naked or engage in sexual activities. मतलब किसी भी चीज में आँख झाँक करना. ठीक है. You are interested to observe and suspect people who are who are who are engaged in a sexual activities. या फिर they are you are looking into or suspecting somebody who is undressing or who is naked. ठीक है. Then the मतलब peep करना. Perpetrators is a noun. It means a person who carries out a harmful, illegal, immoral act. मतलब अपराधियों. This is अपराधी जो कि कोई भी harmful या illegal या immoral act
करता है, ठीक है. Then dislodge is a verb. It means to make somebody or something move from its correct fixed position. मतलब to move somebody who is stagnant, who is constant, who is stiff there, but you are making somebody or something to move from that correct fixed position. Antithetical is an adjective. It means directly opposed or contrasted or mutually incompatible. So which something which is not compatible. Then the next word is creed. It is a noun. A set of beliefs or principles, especially religious ones, that strongly influence somebody's life. And the next word is skirt. Skirt is a verb. It means to go around the edge of something. Hail. Hail is a verb. It means to live somewhere or to have come from there originally. यहाँ पे क्या दिया गया है? To proclaim that somebody or something is very good or very special. ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन the another word for hell will be a person who belongs, मतलब आप जहाँ से originally belong करते हो वहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे जो एडिटोरियल था, it means जैसे कि आपको पता ही होंगे कि mostly word have many meanings. Okay, so they differs. Likewise, hail का भी जो एक है means you consider somebody very special, and in this editorial it means somebody who come from that original, means it is considered to be its original or origin, तो जो भी original place है जहाँ से कि वो आए हैं. Apex is a noun. It means peak, top, climax or high point. Means pinnacle or crest. Tribunal is a noun. It means a type of court with the authority to decide who is right in particular types of dispute or disagreement. Tribunal is a type of court which will decide whether a particular thing or person or what is in a dispute or disagreement is right or not. Will give judgment towards it. Pursue is a verb to follow somebody or something in order to catch him or her or it. Then the next word is ravage. Ravage is a verb. It means to damage something very badly, to destroy something. रेवेज मतलब जिसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट छोड़ना, ठीक है, मतलब किसी को तबाह कर देना. यू विल लीड him or her or a thing towards destruction. Incessantly is an adjective. Means constantly, non-stop, मतलब बिना रुकावट के निरंतर चलते जाना या फिर लगातार चलते जाना. In a constant way, in a kinetic way. Ferocious, OUSS, so it's an adjective. Very aggressive and violent, ठीक है, मतलब बहुत ही क्रूर. Then the next word is gasp. Gasp means to take a sudden loud breath with your mouth open, usually because you are surprised or in pain. मतलब आप जब थक जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? You open your mouth and you shy. Okay, it's not मतलब शर्माना नहीं, वो जो shy करना means you take a long breath. Gasp and sigh are equally similar. The next word is appalling. Appalling is an adjective. It means horrifying or shocking, भय और विस्मय उत्पन्न करने वाला. Then the next word is bewildering. It's an adjective. It means to confuse or to puzzle someone. हक्का बक्का करने वाला. And the next word is chasten. Chasten is a verb. It means have a restraining or moderating effect on, bring down. किसी भी चीज में you are having a effect. Then the next word is erode. Erode means to destroy something slowly. Erosion, as we know, erosion means something that get destroyed, but in a very slow process, in a very slow manner. Mayhem is a noun. Means confusing and fear usually caused by some sudden shocking event. जो भी event हो रहा है, means shock या फिर confusion या फिर fear पैदा, डर या फिर confusion पैदा करना. Suburb means the nearby areas, an area where people live.
that is outside the central part of a town or city, means upnagar. And parlous, parlous is an adjective. It means full of danger, uncertainty, precarious. Then intermittent, intermittent is an adjective. It means stopping for a short time and then starting again several times. मतलब क्या है ना, रुक रुक कर चलना, means first you start then you stop, मतलब stop हो के again it continues with the interval in between. Staggering, staggering is an adjective that you find difficult to believe, मतलब चौंका देने वाला, means something you are, it is, मतलब जो कि आप suddenly believe नहीं कर पा रहे हो. And the next one is inundation. It means noun. इसका मतलब है an overwhelming abundance of people or things. Flood. Then malady. Malady is a noun. It means a serious problem. Jeopardy. Jeopardy is a noun. It means danger of loss or harm or failure. Catastrophic is an adjective. इसका मतलब क्या है? Disastrous, tragic, fatal, terrible, प्रलयंकारी. Okay, it is catastrophic मतलब जो भी destruction cause करता है. Then the next one is deluge. Deluge is a noun, a sudden very heavy fall of rain or a flood. Impediments मतलब hurdles, something that makes it difficult for a person or thing to move or progress. Then amorphous मतलब कोई भी definite form या shape ना होना, having no definite form. And encroach, encroach is a verb. It means to use more of something that you should. मतलब किसी भी चीज मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रयोग करना. Beset, beset is a verb मतलब घेर लेना, to encompass, to circle or to round up and affect somebody or something in a bad way, to harass somebody. Delineate, delineate is a verb means to describe or draw something in detail, to mark the boundary of something. किसी भी चीज में मतलब border line create कर देना या फिर क्या line up कर देना उसे. Then contour, contour is a noun. It means to shape the outer surface of something. रूपरेखा. Then fetter, fetter is a verb means to confine or restrict. Here fetter का यहाँ पे जो मतलब दिया गया है, chain or manacle used to restrain a prisoner, typically placed around the ankles. fetter एक हो सकता है मतलब जो भी हम कड़ी बांध देते हैं हाथ में, prisoner लोगों के हाथ में जो बंधी रहती है जो chain या फिर manacle, that is also called fetter. But here in this editorial, fetter means to मतलब confine कर देना या फिर restrict करना. So the next word is muster. Muster is a verb. It means to find as much support, courage, etc. as you can. Then the next word is lustre. Lustre is a gentle sheen or soft glow. आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि metals they are ductile, luster, malleable and all. Lustre, lustre मतलब जो कि खुद से मतलब due to the presence of electrons, free electrons, they what they do? They used to shine. A gentle sheen or soft glow comes out from there. Set in stone. It is an idiom. Idiom. इसका मतलब क्या है? मतलब to be very difficult or impossible to change. किसी भी चीज जो कि बहुत ही it is very difficult to be changed. Allure. Allure is a noun. It means the quality of being attractive and exciting. Alluring कहते हैं ना, alluring मतलब क्या है? Alluring मतलब attracting, जो कि हमें attract कर रहा है something. That is attracting us towards it. Triumph. Triumph is it's a noun, means a great success or victory, the feeling of happiness that you have because of this. Then the next word is congregation. It is a noun. It means the act of coming together in a crowd or group or a gathering. Then hark back to, it's a verb. It means to turn back to an earlier topic or circumstance, to go back to something as an original source. Then tilt. Tilt matlab to move or make something move into a position with one end or side higher than the other. मतलब किसी भी चीज जो कि मतलब थोड़ा ऊंच नीच होके रहना, मतलब tilted.
Yearn is a word to want somebody or something very much, especially something you cannot have. मतलब to crave for somebody, to long for somebody, longing. You are longing for summer or you are longing for winter means आप उसके अपेक्षा में हैं. Joust is a verb means engage in a sporting contest in which two opponents or horseback fight with lances, fight, combat or contest. मतलब a tournament or a contest जहाँ के आपके एक ओपोनेंट होगा and you are contesting with that person to fight a combat or to contest. So thank you. Kindly subscribe our channel. ये वीडियो को लाइक करें और जो भी आर्टिकल या फिर स्टडी मटेरियल्स हैं पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप हमें फेसबुक नॉलेजिस्ट में आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं और नॉलेजिस्ट के जो ग्रुप है वहाँ पे आप जुड़ जाएं जहाँ की आपको सारी तरह मतलब पूरी तरह से सारी जो पीडीएफ्स हैं मटेरियल्स हैं आपको वहीं पे मिल जाएंगी. आप हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगी. आपको वहाँ पे जो भी क्लासेस हो रही हैं वो उसकी शेड्यूल सब पता लग जाएंगी. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.